Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the wordiness and redundancy. Let's start. We are at the light board, and today, as I have told you in the intro, we are going to discuss the two different topics, that is wordiness and redundancy. What is wordiness? Let me tell you. Wordiness, it is needless use of words. कि किसी भी बात को हम क्या करते हैं, मुख्तसर बयान नहीं करते, बल्कि उसको क्या करते हैं, नीडलेसली उसके लिए वर्ड्स हम ऐड करते चले जाते हैं. एंड रिमेंबर, brevity is the core of every language. Brevity कहते हैं इख्तिसार को. This is the core property, core characteristic of a language. कोई लैंग्वेज उतनी अच्छी है जितनी उसमें मुख्तसर अल्फाज में बात करने की गुंजाइश मौजूद हो. सो आपने ब्रेविटी को मलहूज़े खातिर रखना है. ब्रेविटी मस्ट बी इन योर माइंड एज फार एज द वर्डिनेस इज कंसर्न. नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है दैट द एरर्स रिगार्डिंग वर्डिनेस सीम क्वाइट ओके टू यू, बिकॉज हम जनरली उसको वैसे ही यूज़ कर रहे होते हैं. देयर इज़ एब्सोल्युटली no abnormal thing as far as our day-to-day English is concerned. तो यहाँ हमें आके उसको आइडेंटिफाई करने में जो है वो मसला होता है. For example, if I say alpha, it was I who made this statement. And secondly, I say I made this statement. Now apparently तो आपको इसमें कोई गलती नहीं लग रही, because the first sentence is quite a common usage. हम day to day life में उसको अक्सर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं. But here it is a faulty one, because we can say the same thing in comparatively fewer words. वही बात जब कम लफ्ज़ों में कही जा सकती है तो उसके लिए needlessly हमें ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे तो मुझे खालिद नदीम शानी का शेर बड़ा पसंद है. कहते हैं कि ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे. और आगे वह कहते हैं कि मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे. सो वैसे तो चाहे वो बहुत ज़्यादा हो, बट हियर यू विल हैव टू सम देम अप. यहाँ आपने उसको खुलासे में ही बयान करना है, यहाँ आपने उसको कॉन्फाइंड वे में बयान करना है. उसको नीडलेसली बात को फैलाने की ज़रूरत नहीं है. Now how to do it? Number one, avoid complex structures such as cleft and apposite. क्लेफ्ट क्यों आते हैं?
कि हम एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. इट्स अ बायोलॉजिकल वर्ड. आपको पता है कि कटा हुआ तालू जो होता है या कटे हुए होंठ जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लेफ्ट कहते हैं बायो में. यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी. तो वहाँ आप उसको क्लेफ्ट कह रहे होते हो. ठीक है. हियर द क्लेफ्ट मीन्स द सेम थिंग. क्लेफ्ट क्या होता है? Where a simple information that can be communicated in single clause that is divided into two clauses. जैसे it was I who made this mistake. This is an example of cleft. तीन तरह के cleft होते हैं. एक को हम कहते हैं all cleft, then what cleft, and finally it cleft. These three types of clefts can be used in day-to-day language. कैसे होते हैं? ऑप्शंस आपके लिए लिखता हूं. All I need is a bit of rest, and beta I need a bit of rest. Now we are communicating the same thing, but here we are using more words. That is why it will be called wordiness. The error of wordiness. Grammatically उसमें कोई problem नहीं है, but we'll have to maintain the brevity. जो इख्तिसार है, वो जो खुलासे में बयान करना है दर्द को, that is the important thing. So the right option for us will be option beta, and this is an example of all cleft. Then what cleft क्या होता है? What I need is some motivation from my family. समटाइम मुश्किल से मिलती है. हमारे यहाँ तो ट्रेंड होता है, क्या कहा जा रहा होता है नॉर्मली, पुत्र शक्ला नहीं FSC करना लिया. ठीक है. और डीमोटिवेशन समटाइम मिल रही होती है. सो ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं कि व्हाट आई नीड इज सम मोटिवेशन फ्रॉम माय फैमिली. एंड द सेकंड थिंग, बीटा ऑप्शन, इफ आई से I need some motivation from my family. So here you can see that the same thing can be said in much fewer words than we have said it in the first sentence. So the right option for us will be beta. So इस तरह के it cleft की मैंने already आपको example दे दी. So cleft का इस्तेमाल आपने क्या करना है? कम करना है. The second thing you can do to avoid wordiness is the correct use of active and passive voice. Now that is a very important as far as our students are concerned, because हमें ये पढ़ाया और बताया जा रहा होता है that all the sentences can be converted from active to passive or from passive to active. हमारे syllabus में शामिल है the question related to conversion from active to passive or passive to active. But remember, all sentences cannot be
I should say converted. But remember that all sentences cannot be converted from passive to active or active to passive. There are some certain rules. There are some certain usages. और वो क्या है? Active voice is used when doer of an action is known. Because active voice का मतलब ही यही है. We have already discussed it in the verb that active and passive, these are actually the form of verb. Voice is the form of verb which tells us whether the subject of the sentence does something or something is done to it. मैं आपके लिए एक बार फिर लिख भी देता हूँ इसको कि voice is a form of verb that tells us whether the subject of a sentence does something or something is done to it. कि सब्जेक्ट आपका कुछ काम कर रहा है या उस पर कोई काम किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल हियर. Ali has scored a century. Now the century is scored by Ali. Ali is our subject and is doing something. That is why we are calling it active. That is the reason why we call it active voice. ठीक है? Because the verb it actually acts. वो कोई काम करता है और चूंकि वो काम कर रहा होता है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं. और पैसिव का मतलब भी क्या होता है? टू रिसीव. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं a century was scored without much effect. Now here the subject is century and it is not doing anything. ये कोई काम नहीं कर रही. ये क्या कर रही है? It is receiving an action. It is being scored. That is why we call it passive. Passive का मतलब भी क्या होता है? Passive का मतलब ही है to receive. And because the subject is receiving something, that is why we call it passive voice. Got it? Clear? और एक चीज़ और भी देख लें, हम ऑलरेडी इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी किया था कि सब्जेक्ट is not the doer of an action. It's a common misperception. Subject is not the doer of an action. It is the topic of our discussion. It can be doer or it can be receiver. जैसे यहाँ पर Ali, it was doer and the century was receiver. And both are our subjects. So doer subject नहीं होता. काम करने वाले को subject नहीं कहते. Subject कहते हैं topic of discussion को. So now let's get back to the usage of active voice and passive voice. Active voice is used when the doer of an action is known. अगर doer of an action known होगा तो फिर क्या use करेंगे? Active voice use करेंगे. For example,
Hera has scolded her sister a while ago. And Beta her sister was scolded by Hera a while ago. Now we have the doer of an action. हमें पता है कि who has scolded, तो we'll go for active voice and not for the passive voice. ठीक है, वर्डिनेस भी इसमें ही है. और दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझनी है, अगर मैं ये कहता हूं someone has stolen my pen, here I should use passive voice because there is no need to highlight someone because someone is unknown. तो इसकी बजाय मैं क्या करूंगा, my pen has been stolen, that's it. So you can see that the passive voice, लिख भी देता हूं, passive voice is used doer is unknown. जब doer of an action unknown होगा, only then we can use passive voice. Otherwise, we shall use active voice. कुछ और examples भी करते हैं next chunk में, और wordiness की कुछ और examples भी देखते हैं. So let's move on जी, और देखते हैं कि examples कैसे करेंगे हम इनकी active और passive voice की. For example, if I say the match was cancelled by the umpires, and the beta option is the umpires cancel the match. Now grammatically you do not see any major error. Agar if you use the knowledge of FSC and metric, you will say that both these sentences are absolutely correct. One is in active voice and one is in passive voice. But now we have learned that passive voice will only be used if the object, if the doer of an action is not there. Okay? And because here we have the doer of the action who has cancelled the match, obviously the umpires. So the right option for us will be option alpha. On the other hand, if I say someone has told a very interesting story, and the beta option is I can further extend it to the class. An interesting story was told
to the class. Here, we do not know who told the story. That is why we'll use passive voice. And what is the reason for it? As I've just explained, because the subject is not the doer of an action. It is the topic of discussion. In Urdu, we call it not file, we call it मौज़ूए गुफ्तगू, जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं. That is what we call subject. And you have learned it. अगर आप the reward अपना याद करो तो उसमें वो ये बात बड़ी खुल के कहते हैं और कहते हैं कि of course he made speeches on many other subjects. Now वो क्या मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं या फाइलों पे बात कर रहे हैं? Obviously he is talking about different topics. तो वहाँ subject का मतलब क्या है? That is topic and that is not the file or anything like that. Got it? Then फिर इसी से related एक question भी आता है और कहते हैं कि what was the subject discussed at the club? Club में गुफ्तगू का मौजू क्या था? So subject is not the doer of an action, it is the topic of discussion. And why do we use passive voice when the doer is not known? Because if it is someone which we do not even know, अगर कोई ऐसा बंदा जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है, why are we giving it so much importance कि हम उसको क्या बना रहे हैं? We are making him the topic of our discussion, the main theme of our sentence. Why? There is no need to do so. If it is some unknown thing, तो फिर क्या करेंगे? If the doer is unknown, you will make the object actually the subject. ठीक है? फिर आप काम को फोकस करेंगे कि भाई कार्रवाई क्या हुई, मसला क्या हुआ, what was the thing that was expressed, उसको फिर आप importance देंगे, ना कि उस unknown doer को importance देंगे. So that is why we use active voice when the doer is known, because फिर हम उसी को importance देंगे. Vice versa देखें ना, when we have the umpires, when we have the doers, how can we give importance to match? वो तो secondary चीज़ होगी ना. Main चीज़ क्या होनी चाहिए? The main topic of discussion should be the doer. क्योंकि उसकी वजह से मैच कैंसिल हो रहा है तो मैच तो फिर सेकेंडरी उस पर चला गया ना लेवल पे. द मेन थिंग, द कोर पॉइंट विल बी द डूअर एंड दैट इज व्हाई हियर वी विल यूज एक्टिव वॉइस एंड हियर विल गो फॉर पैसिव वॉइस. नाउ अनदर वे टू अवॉइड वर्डिनेस इज अवॉइड complex or lengthy modifiers. Modifiers क्या हैं? Adjectives, adverbs. उसको आपने क्या करना है? Complex या बहुत ज़्यादा lengthy नहीं रखना. For example, I want an athlete that is physically super fit. And the beta option is I want a physically super fit athlete. Now we are conveying the same thing, the same meaning, but here we are doing it in a more brief manner. So we are avoiding wordiness. So that is physically super fit की बजाय मैंने क्या किया? An athlete that is physically super fit.
मैंने क्या कर दिया, अ फिजिकली सुपर फिट एथलीट. सो दैट इज हाउ यू कैन अवॉइड वर्डीनेस. एक और एग्जांपल करते हैं. I want a partner who has a high level of patience. On the other hand, if I say I want a highly patient partner. So here the right option for us will be option beta. Although grammatically both sentences seem correct, and that is why wordiness is always a tough thing to handle, because it seems that the sentence is absolutely true, but because it contains wordiness, it cannot be considered true. बात एक ही है, वही बात है, लेकिन यहाँ we are communicating that thing in a more concise and brief manner. That is why our right option will be option beta and not option alpha. Now in the next chunk we'll discuss about redundancy. What is redundancy? वो हम चल के next chunk में देखते हैं. ले मेरे बच्चों, now we are moving to the next half of our lecture, and that is about redundancy. redundancy क्या है? Needless repetition or use of words. कि या तो हम needlessly use करते हैं उन्हें और we needlessly repeat them, and that is a very common thing you do. अब redundancy को avoid करने का तरीका क्या है? पहले तो ये समझ लें कि what is redundancy. अक्सर आप कह रहे होते हैं सर दोबारा रिपीट करना है. What do we mean by दोबारा रिपीट करना है? दोबारा means दोबारा and repeat means also दोबारा. So what do we mean by दोबारा repeat? अगर उस्ताद हो ना कोई मेरे जैसा, वो 4 बार पढ़ाएगा आपको, ठीक है, कि एक बार रिपीट करेगा फिर दोबारा रिपीट करेगा, ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू ऐड दोबारा रिपीट कर दें. सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिडंडेंसी. अब रिडंडेंसी कैसे होती है? सबसे पहला जो आपने काम करना है, अवॉइड द repetition of modifiers. Especially the modifiers that express the same meaning जिनकी नेचर सेम हो, उनको तो आपने क्या करना है? अवॉइड करना है. यू मस्ट हैव रिटन बर्थडे मैसेजेस टू योर फ्रेंड्स. दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिडंडेंसी. क्या कह रहे होते हैं आप? चार्मिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, स्टनिंग, इतनी खूबियाँ उसमें ऐड कर देते हैं, खुद परेशान हो जाती है या हो जाता है, ठीक है. लड़के वैसे अमूमन काम ही करते हैं, अमूमन जिस तरह के वो मैसेज भेज रहे होते हैं, यू ऑल आर अवेयर. मैं इतना ही कहूँगा कि समझ रहे हो. सो वहाँ आप
देखते हो कि आप एक ही एडजेक्टिव क्या कर रहे होते हो, रिपीट कर रहे होते हो, एंड दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिडंडेंसी. वंस यू हैव यूज्ड ब्यूटीफुल, there is no use of using charming, attractive, stunning. इन सब का मतलब ही क्या है, खूबसूरत ही है. ठीक है, सो आपने क्या करना होता है, उसको अवॉइड करना होता है. इस तरह के एडजेक्टिव्स आपने रिपीट नहीं करने. सेकेंडली, मैं इसके एग्जाम्पल भी बल्कि आपके लिए लिख देता हूँ. She is a beautiful attractive child. Beta, she is a beautiful child. The right option will be option beta, because if you have used beautiful, attractive means the same thing. उसके साथ कोई अलग से चीज नहीं आ जाएगी. Got it? Then avoid using any degree or modifier with absolute adjectives. Absolute adjectives क्या होते हैं? These are the symbol of perfection. वो ऑलरेडी परफेक्शन की अलामत होते हैं. कौन से होते हैं? Last, complete, full, whole, genuine, round, perfect, etc. Now, these adjectives do not need any modifier or they do not need any other degree. For example, if I say the car is in fully genuine paint, and the beta option is the car is in genuine paint. Now, genuine itself is a symbol of perfection. There is no need to add fully genuine. आपकी बुक में भी ये गलती है वैसे. वो कहते हैं the offer is completely genuine. Now, genuine is the thing that is completely genuine. Genuine तो वही चीज़ है ना. If even a single equipment, even a single bit of equipment is removed from a machine, that machine does not remain genuine. For example, air conditioner है, उसमें से एक भी आप nut paste भी निकाल लेंगे, तो will it be called a genuine thing? No. Same is the case with any other thing. So genuine is a symbol of perfection.
You do not need to add any modifier or any degree. इसके साथ कोई और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. So the right option is option beta. Same is the case with some more example. He ordered me to fully finish the job. Beta, he ordered me to finish the job. Now you know that finish is automatically fully finished. So the right option is option beta. So fully finished कहने की हमें ज़रूरत ही नहीं है because we know that finish only means fully finished. ठीक है? So these are some of the common things, some of the common mistakes we make. Shapes में हम बहुत commonly ये error करते हैं. एक और example करते हैं. This is the most perfect piece of art, and beta, this is the perfect piece of art. Now again we know that perfect is already something that is the most perfect. So दोबारा उसको most लगाने की ज़रूरत नहीं है because perfect is already the symbol of perfection. So there is no need absolutely to add most perfect. So our right option will be option beta. So एक चीज़ तो हमने ये करनी है कि repetition avoid करनी है. Secondly जो degrees हैं या modifiers हैं, they must not be used with absolute adjectives. Thirdly, double comparative or superlative degrees must not be used. For example, if I say he is more clever than his sister, and beta, he is cleverer than his sister. Now there is no need to add more cleverer. Why? Because cleverer itself showing comparison. It is already a comparative degree. So double comparative या double superlative use करने की ज़रूरत नहीं है because it will amount to redundancy. So ये तो हो गया adjectives के साथ. Then be careful about the verbs that
do not need any preposition. उन verbs के बारे में आपने बहुत केयरफुल रहना है जिनको किसी और preposition की ज़रूरत नहीं होती. And the common ones are, लिख भी रहा हूं मैं आपके लिए, i.e. enter, reach, resemble, take after, tell, order, command, ask, request, etc. Now we all know that these verbs do not require any preposition whatsoever because they are already self-explanatory. Enter automatically means going in. तो enter in कहने की ज़रूरत हमें नहीं है. So if I say he entered in the room and the beta is he entered the room, we can easily tell that the right option for us will be option beta. Because enter automatically means in. जैसे मेरी है हम अक्सर करते हैं. मैं इधर आपके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ. He married a doctor and beta he married with a doctor. Now you know that marry, when it is used in active voice, it does not need any preposition. So इसके साथ with use करना क्या है? That is actually redundancy. So instead of going for option beta, we'll go for option alpha. He married a doctor, not he married with a doctor. इसके अलावा कुछ और combinations हैं, कुछ commonly used combinations हैं that can create redundancy. In the next chunk, we are going to discuss about all these combinations. मेरे बच्चों, now we are coming towards certain pairs that cannot be used together. And the first one is very common. Repeat again. I've already told you. अब अक्सर कह रहे होते हैं सर दोबारा रिपीट कर दें. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है, टीचर भी कह रहा होता है बच्चों सिर्फ आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. We do make that error as well. So repeat again cannot be used. Again, in beta, he repeated the same line. Now, you can see that the right option is option beta. Because repeat again makes no sense at all. Because if you have said repeat, there is no need to use again. Then we say
repeat twice, it is also a faulty combination. He repeated the same line twice. भाई repeated का मतलब क्या है? Twice ही है ना, ठीक है? So if I say he repeated the same chapter twice, that is option alpha and that is beta. He repeated the same line, or I should say chapter. The right option is option beta. So ये इस तरह से आपने कुछ certain हमारे पास combinations हैं जो आपको avoid करने हैं. Another very famous combination is attached herewith, and you must have seen that error in highly formal communications as well. People say find my documents attached herewith, and the beta is find my documents attached. Now attached herewith इसके साथ लगे हुए चिपके हुए क्या है, इसी के साथ ही चिपके हुए होंगे ना. So there is no need to attach herewith. So the right option will be option beta. Another famous combination that is connect together. Now again it's a faulty thing. Why? Because connect का मतलब क्या है, दोनों सिरों को जोड़ देना, और together का भी मतलब क्या है, दोनों सिरों को जोड़ देना. If I say he connected the both ends, that is sufficient. There is no need to add together, because automatically when I say connected, it means together. इसको इकट्ठे ही जोड़ देना कहेंगे, इसको और दोबारा together लगाने की ज़रूरत नहीं है. Another important pair is proceed forward, and the sixth one is progressed forward. And we also use advanced forward. Now you can all see that proceed, progressed and advanced, it automatically means progressed forward, proceed forward, advanced forward. बैकवर्ड तो एडवांस नहीं हो सकता है, एडवांस क्या है, आगे बढ़ना, ठीक है. The army advanced forward as soon as the enemies surrendered. Now there is no need to add forward. So the right one will be
the army advanced as soon as the enemies surrendered. So you can see that these combinations cannot be used because the first word we are using is self-explanatory. Progressed, advanced, proceed, इसका मतलब सलसल क्या है? आगे बढ़ना. The next pair is return back. ठीक है, हम अक्सर कहते हैं he returned the book back. Why? Return means वापस करना, तो back का मतलब भी क्या है? वापस करना ही. So return back, there is absolutely no use of using return back. Then another thing, we use new advancement and especially new invention and new innovation. Now you all know that all these things are absolutely new. Advancement भी क्या होती है? नई होती है. Innovation भी क्या होती है? नई होती है. पुरानी old innovation तो होती नहीं है ना. Innovation is already new. Invention, we all know it cannot be old invention. It must be the new invention. तो इजाद कोई चीज़ होगी तो वो क्या होगी? Obviously वो नई ही होगी, वो पुरानी तो इजाद नहीं होगी. इनोवेशन भी एडवांसमेंट के सेंस में ही आता है. इट कैन ऑल्सो बी ओनली न्यू एंड नॉट ओल्ड. देन यू मेक अनदर एरर दैट इज सच एज एंड देन यू यूज फॉर एग्जाम्पल. Such as mean the same thing. For example, if I say I like such things as, for example, he likes. So you can clearly see that there is absolutely no need of, for example. As is sufficient कि वो क्या करे? अपनी meaning convey कर दे. Then another important pair, sufficient, enough. This is a common error we make. The water is sufficient enough for my use. भाई sufficient का क्या मतलब है? Enough. And enough means the same thing, sufficient. So इनको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है. Sufficient लग जाएगा तो there is no need of enough, and if we are using enough, then there is no need of sufficient. Then we all know after forbade, lest, and unless, no need to add any negation. इनके बाद negation add करने की ज़रूरत नहीं है. We have already discussed it in the conjunctions that unless means already ऐसा ना हो के जब तक ये नहीं होगा. Lest means the same thing. Walk with care lest you should fall, not you should not fall. So you can see that if I say walk with care lest you should fall, not you should not fall, because lest का क्या मतलब है? Lest का मतलब है ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ. हम ये तो नहीं कहेंगे ऐसा ना हो कि तुम ना गिरो. ठीक है,
हम तो ये कहेंगे ना ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो यू शुड आएगा, यू शुड नॉट नहीं आएगा। सेम इज द केस विद फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। I forbade the children to tease the beggar. Now you can see that if I use not to, again if I add negation, तो इसका मतलब है कि मैंने बच्चों को मना किया या मैंने बच्चों को फ़कीर को तंग करने से मना किया। If I add another negation, it means कि मैंने बच्चों को फ़कीर को तंग करने से मना नहीं किया, and that is not our intention. So इनके साथ दोबारा negation जो है वो नहीं आएगी. So these are the pairs you should be careful about while using them, because all these pairs amount to redundancy. I hope कि आपको redundancy का concept और इन pairs का usage भी जो है वो बहुत evident और clear हो गया होगा.